Hello students, this is Akshita, your educator. I welcome you all on the platform of Global Online Sparda Pariksha. So as we know friends, Global Online platform has launched a complete course for upcoming Maharashtra B.Ed CET and ELCT examination 2023. And in this particular course, we are discussing the whole syllabus of Maharashtra B.Ed CET and ELCT in detail. And this comprehensive course, we have begun with the unit of English, and in today's lecture we'll be discussing about the topic figure of speech. So some of the important figure of speech that can be asked in the examination, we'll be discussing that in maximum of 2 lectures. Okay, so this is the lecture number 1 of figure of speech. So before moving into the video friends, let us discuss what are the features of the course launched by Global Online platform for upcoming Maharashtra B.Ed CET examination 2023. Here you will be provided with the full syllabus video lectures, 10 full syllabus test series, full syllabus complete notes, and 2000 plus MCQ question bank. All above features will be provided to you in the course fees of 1000 rupees. So if you're preparing for B.Ed CET examination, you can enroll to this particular course of rupees 1000, in which comprehensive analysis of whole syllabus will be carried out. Along with B.Ed CET, if you are preparing for ELCT, now ELCT is the examination which you have to give. You have to opt English medium B.Ed colleges. Okay, so English language content test is the exam if you are preparing to get the admission in the English medium B.Ed colleges. ये एक्स्ट्रा 50 मार्क्स की आपको एग्ज़ाम देनी पड़ेगी. B.Ed CET के साथ साथ you have to prepare for ELCT for English medium colleges. Now if you want the compiled course of B.Ed CET and ELCT, this will be provided to you in the course fees of 1500 rupees. So whichever you want to get enrolled, you can just simply mention in the comment section, or you can contact us on this given WhatsApp number, which is 8179138413. Else you can download the Global Online application from where you can get enrolled. I'll tell you the 3 steps in which you can get enrolled. This is the first step, where you have to install the Global Online application from the Play Store with such a logo. Once you will install the application, open it, you will find such interface. In this particular interface, there is an icon named as Store downwards. Okay, you have to click on it. Once you will click on the icon, you will move to the page called as My Courses, where you have to type CET. If you will type CET, the course of a B.Ed CET along with the fees will be displayed downwards. So whichever you want to get enrolled to the course, you can get enrolled, because we have different types of courses. For law CET examination also, we have the courses for 3 years as well as for 5 years. For Maharashtra SET paper 1, paper 2, we have the different courses. Similarly for CSIR NET paper 1, paper 2, UGC NET paper 1 and paper 2, we have different courses available. Okay, so you can get enrolled to the course whichever you want to. So let us begin with today's lecture, in which we are discussing the figure of speeches. So the very first figure of speech in today's lecture we are discussing will be simile. So a simile is a figure of speech that compares two different things. टू डिफरेंट थिंग्स के अंदर अगर कंपैरिजन दिख रहा है, इफ देर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स दैट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, देर आर टू डिफरेंट थिंग्स. There are two different things. Okay, there are two different things, and these two different things are having similar properties, or characteristics, we can say, or characteristics, and we are making the comparison between these two things. At that time we are going to use simile. So a simile is a figure of speech that compare two different things that have similar properties or characteristics. Okay, so simile are often confused with metaphors actually, but metaphor is what it is, another different figure of speech. Okay, we should not get confused between the simile and metaphor, but people often get confused with this both. Okay, so figure of speech. Okay, so there is a comparison between the simile and the figure of speech. Simile we'll be discussing in the upcoming lecture. So
easily, the easiest way I'll tell you to differ to make a difference between the simile and the metaphor. So the easiest way to identify a simile is like words like or as are used here. Words like as are used in the simile. So the basic difference if we find between simile and the metaphor, or the easiest way is to identify a simile as opposed to a metaphor, is to look for the words like or as. You have to look for the words like or as. Thus the best example, if I like to tell you, will include like word or as word in its sentence. Okay, for example, as proud as peacock. As proud as a peacock. So this is the best example for simile where as word are used. Okay, like और as word अगर दिख रहा है किसी सेंटेंस के अंदर तो easily वो क्या हो जाता है, simile. तो हमने दो चीज़ें पढ़े हैं simile के अंदर. One thing is that simile के अंदर हम comparison करते हैं ऐसे दो थिंग्स, ऐसे दो चीज़ें जिनकी प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है, उनके अंदर अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज सिमिली. सो द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन सिमिली आर यूजुअली लाइक और एज. अगर सेंटेंस के अंदर लाइक और एज अगर आपको दिख रहा है किसी फिगर ऑफ स्पीच के अंदर, तो यूजुअली वो क्या हो जाता है, दैट इज सिमिली. सो सिमिली और मेटाफर के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है. मेटाफर इज़ व्हाट, मेटाफर एक अलग फिगर ऑफ स्पीच है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे. बट मेटाफर और सिमिली में बहुत स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. यूजुअली सिमिली के अंदर लाइक और एज वर्ड्स आ जाते हैं. एग्जाम्पल भी मैंने अभी एक दिया था, एज प्राउड एज पिकॉक. प्लीज राइट डाउन दिस एग्जाम्पल. सो लेट अस सी some of the examples of the simile. Okay, the very first example is as black as coal. Okay, so here again, as I told you, as is used. Okay, example is his face became as black as coal. Please underline this, as black as coal after being criticized. Okay, so here as black as coal. Okay, so यहाँ पे दो चीज़ें कंपेयर हुई है, एक पर्सन, one person and another one is the coal. The comparison between two things has been carried out. One is the person and the another one is the coal. Okay, so उनके properties अभी क्या similar दिखा रहे हैं. He has become, his face has become as black as coal. The color of the person has been compared with the color of the coal. तो दो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं. ओके, हिज फेस हैज़ बिकम एज ब्लैक एज कोल आफ्टर बीइंग क्रिटिसाइज्ड. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई एज ब्लाइंड एज ए बैट. Okay, again as and as is used here. This is again a simile. Example is my uncle is as blind as bat without his spectacles. So the uncle's comparison has been done with the bat. Okay, and which property has been compared here, the blindness. Okay, so my uncle is as blind as the bat. Two different things have been compared. Okay, two different things have been compared. Next one example is as cool as a cucumber. As cool as a cucumber. Example is while all of us were panicking just before the declaration of the results, Nana was as cool as cucumber. So here the coolness of the Nana has been compared with the coolness of the cucumber. So the two different things again have been compared. So we are looking at each and every example here, that in each and every simile as or like has been used. We have seen the examples of as, we'll see the example of like also. So let us see the next example, as brave as lion. So for this simile I have given the example, while fighting the war the soldier was as brave as a lion. Okay, so here while fighting the war the soldier was as brave as the lion. So here the comparison of the braveness of one person is done with the lion. Okay, so here we can clearly see again as has been used. Nextly, cunning like a fox. Don't trust his words, he is cunning like a fox.
like. So here in the simile, like word has been used. So never get confused between the simile and the metaphor, because the things have been compared in simile also and as well as in the metaphor also. But if we specifically want to differ what is the difference between the simile and the metaphor, we can clearly identify them on the basis of these two words, as or like. अगर ये दो words अगर आ रहे, then that is simply simile. Okay, so the next example is as cold as ice. The expression on her face was as cold as ice. That was, it means that as passive as the ice. Okay, face was cold as ice. As is again used in the simile. As busy as a bee. My wife is as busy as a bee in the morning. Okay, so here some of the examples have been discussed, and I'll give you the PDF. Please let me know in the WhatsApp group. I'll send you the PDF of all the important figure of speech एज एग्ज़ाम रेलिवेंट. ओके, जितने भी एग्ज़ाम रेलिवेंट हमारे फिगर ऑफ स्पीच है वो हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पे, और साथ ही साथ वो जो PDF है मैं ग्रुप के अंदर शेयर करती हूँ. प्लीज़ एक बारी जो है आप ये वीडियो देखने के बाद ही मुझे जो है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर टेक्स्ट करना, देन ओनली आई विल गिव यू द PDF. अंटिल अनलेस आप वीडियो नहीं देखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है PDF का. ओके, ऑलरेडी फ्रेजेस और इडियम्स का आई हैव शेयर्ड द PDF, सो फ्रॉम देयर यू कैन ऑल्सो get this PDF of figure of speech, but first you watch the video. Okay, next हम देखेंगे metaphor. मैंने अभी बताया था many of the students get confused between the simile and metaphor. अभी confusion नहीं रहेगा. Okay, so now what is a metaphor? A metaphor is a figure of speech that compared a shared traits between two unlike things. अभी हमने देखा था shared traits. Shared traits मतलब what? Common features. Traits means what? Features, we can say properties or the features. Traits means features or the properties. Okay, so a metaphor is a figure of speech. किस चीज़ के अंदर कंपैरिजन हो रहा है? इसके अंदर, इस फिगर ऑफ स्पीच के अंदर देयर इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स विच आर अनलाइक. अनलाइक मतलब जो सिमिलर नहीं है. बिटवीन टू अनसिमिलर और अनलाइक थिंग्स के अंदर अगर कोई कंपैरिजन हो रहा है और दो ऐसी चीज़ें जो काफ़ी डिफरेंट है बट उनके अंदर कुछ सेम फीचर्स भी है, शेयर्ड ट्रेट्स है, मतलब कॉमन फीचर्स भी है. ओके, सो लेट अस सी द एग्जाम्पल ऑफ द मेटाफर. For example, in the metaphor, my heart is a bottomless ocean of love. Okay, this is the example of metaphor. So in this particular example, my heart is the bottomless ocean of love. This is the example of metaphor. इसका अभी हम explanation देखते हैं. Okay, so here the depth of your heart has been compared to the depth of the ocean. So heart, ocean, these are two unlike things. दोनों के अंदर कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, बट उनके कुछ फीचर्स है, उनके कुछ ट्रेड्स है, वो हम कॉमन ट्रेड्स बोल सकते हैं या फिर शेयर्ड ट्रेड्स या फिर शेयर्ड फीचर्स बोल सकते हैं. दीज आर दी फीचर्स और द ट्रेड्स विच हैव बीन like we can say compared and similarity has been shown here. Okay, so now look here. My हर्ट इज़ बॉटमलेस. बॉटमलेस मतलब उसको कोई डेप्थ नहीं है. सिमिलरली ओशन को भी कोई डेप्थ नहीं है, राइट? इट्स डेप्थ कैन नॉट बी काउंटेड. सिमिलरली माई हर्ट इज़ अगेन बॉटमलेस, मतलब फॉर द लव, फॉर योर लव my heart has no depth. Okay, so now look here. You're comparing the deepness of your love टू द डीपनेस ऑफ द ओशन. दो चीज़ों के अंदर कंपैरिजन हुआ है. डेप्थनेस ऑफ द हर्ट टू द डेप्थनेस ऑफ व्हाट? ओशन. टू द डेप्थनेस ऑफ व्हाट? ओशन. गॉट इट? नॉट ओनली डज it shows the reader that your love is very deep indeed, but it also creates a mental picture of the deep ocean. तो एक चीज़ दिमाग में याद रखना है, मेटाफर इज़ समथिंग वी आर नॉट जस्ट गेटिंग इट्स मीनिंग. ठीक है, दोनों के अंदर हमें एक चीज़ पता चल रही है कि जो लव है फॉर द पर्सन इज़ comparing with the depthness of the ocean, no doubt, but at the same time we are creating a picture of it in our brain. Okay, mental picture भी create हो रही है, the depthness of the ocean with the depthness of the heart. Okay, so this is nothing but this is the metaphor. Let us see some of the examples of the metaphor.
Heart of the stone, heart of stone, its meaning is cruel or stern nature. किसी का अगर काफ़ी ज़्यादा क्रूअल नेचर है then we can use the metaphor named as heart of stone. Okay, example for this is my teacher has heart of stone. It means my teacher is cruel. My teacher is cruel. Her nature is cruel. Okay, stern nature है उनका, तो we'll use metaphor heart of stone. Next example is the zoo metaphor. The zoo metaphor, something which is crowdy and noisy, that at that time we can use the metaphor zoo metaphor. The zoo metaphor. Okay, so let us see the example of the zoo. The classroom turns into zoo during the recess. Okay, इंटरवल्स के टाइम पे या फिर लंच ब्रेक के टाइम पे जो क्लासरूम्स है इट टर्न्स इनटू द जू. इट मीन्स दैट काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड, काफ़ी ज़्यादा नॉइजी बन जाता है. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द टाइम इज़ मनी. टाइम इज़ मनी. द वैल्यू ऑफ टाइम इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज मनी इटसेल्फ. ओके, एग्जाम्पल देखना. टाइम इज़ मनी माई फ्रेंड. टाइम इज़ मनी माई फ्रेंड. टाइम इज़ मनी माई फ्रेंड मीन्स टाइम इज़ एज मच एज वैल्यूएबल एज मनी इज़. ओके, मनी जितना वैल्यूएबल है उतना ही ज़्यादा टाइम भी वैल्यूएबल है. ओके, सो दिस इज़ द मेटाफर. टॉल ट्री, टॉलर इन हाइट लाइक अ गेंट. समवन हु इज़ टॉलर इन हाइट, तो उनके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? टॉल ट्री. ही इज़ अ टॉल ट्री. ही इज़ अ टॉल ट्री डजंट मीन दैट ही इज़ अ ट्री, राइट? सो इट मीन्स दैट the tree has been compared with the height of the person, that is his height is like a gant. Okay, so next example is the wind screamed in his face while he was riding the bike. अब इसका मीनिंग देखेंगे. the wind screamed in his face मतलब did the wind just screamed in his ears or something like that? No. इसका actual meaning क्या है? the wind is compared with the scream. यहाँ पे wind का comparison किसके साथ हुआ है? scream के साथ. scream मतलब चिल्लाना. okay, it is compared with the scream to emphasize on how furiously it blew. कितने तेज़ी से जो है विंड ब्लो हो रहा था, उसके साथ हमने किस चीज़ का कंपैरिजन किया है? द राइडिंग ऑफ हिज बाइक. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गो फॉर अ वॉक और यू विल बी अ काउच पोटैटो. Go for a walk or you will be a couch potato. Meaning is here the person is told that he or she will turn fat or bulgy like a potato if he is avoiding the exercise. अगर हम एक्सरसाइज अवॉइड कर रहे हैं तो स्लोली क्या हो जाएगा? हम बल्जी या फिर फैट बन जाते हैं. ठीक है, सो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे मेटाफर क्या यूज़ करें? गो फॉर द वॉक और यू विल बिकम अ काउच पोटैटो. बिकमिंग अ काउच पोटैटो इट मीन्स दैट यू आर बिकमिंग फैट, यू आर गेटिंग बल्जी. Okay, next example is her heart of stone was a result of previous unfortunate events in her life. It means meaning देखेंगे. in this sentence the hurt is symbolized by stone emphasizing on the lack of empathy she developed. it means slowly कभी कभार क्या होता है, हम लाइफ में चीज़ें सीखते जाते हैं, एक्सपीरियंस आता है, लोग समझ आते हैं. पहली बार जब हम स्टार्टिंग इनिशियली हमको लोगों को समझना इज़ डिफ़िकल्ट, बट स्लोली थ्रू द एक्सपीरियंस, स्लोली थ्रू देयर बिहेवियर, स्लोली थ्रू आर एक्सपीरियंसेस हम क्या सीखते हैं कि लोगों के साथ फ्रेंडशिप इजीली नहीं करनी चाहिए, या फिर कुछ ऐसे चीज़ें होती है लाइफ में कभी कभार बुरी कि हम स्लोली ग्रेजुअली विद टाइम वी बिकम और वी बिहेव इन सच अ वे कि हमें उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होने लगता है. सो एट दैट टाइम आवर हर्ट बिकम्स लाइक ए स्टोन. हर हर्ट ऑफ स्टोन वॉज अ रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस अनफॉर्चुनेट इवेंट्स. ऐसी चीज़ें उसकी लाइफ में हुई थी, अनफॉर्चुनेट चीज़ें, अनफॉर्चुनेट इवेंट्स इन हर लाइफ, इसीलिए अभी शी इज़ दी हर्ट ऑफ स्टोन. ओके, सो मीनिंग इन दिस सेंटेंस द हर्ट इज सिम्बलाइज्ड बाय दिस स्टोन एम्फोसाइजिंग द लैक ऑफ एम्पैथी शी डेवलप्ड. अभी सिंपैथी और एम्पैथी के बीच में अगर आपको डिफरेंस नहीं पता है तो एक बार ही देख लेना. सिंपैथी इज समथिंग दैट वी नो, बट एम्पैथी मतलब अगर कोई चीज़ चल रही है, ठीक है, किसी के लाइफ में समवन इज़ फेसिंग दी पेन. ओके, सो उनकी जगह पे खुद को रखना इज़ नथिंग बट एम्पैथी. ओके, दैट इज़ नथिंग बट एम्पैथी. ओके, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच that we are studying is personification. अभी personification is a poetic literary device in which non-living things are given human traits. जो non-living things है,
जिनके अंदर लाइफ नहीं है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, उनको हम ह्यूमन ट्रेड्स दे रहे हैं, ह्यूमन फीचर्स जो है दे रहे हैं. इट इज़ नथिंग बट पर्सोनिफिकेशन, अ पोएटिक लिटरेरी डिवाइस. नॉन लिविंग थिंग्स का अगर हम ह्यूमन फीचर्स बता रहे, ह्यूमन ट्रेड्स दिखा रहे, देन दैट इज़ नथिंग बट पर्सोनिफिकेशन. द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन इज व्हेन वी डिस्क्राइब द विंड इज ब्लोइंग और द sun is shining. Wind is blowing, sun is shining are the most common examples. Okay, in this particular example, the non-living objects, that is the wind or the sun, is being described as if they are alive or could act on its own according. Look here. So द विंड इज़ ब्लोइंग, द सन इज शाइनिंग. यहाँ पे दो चीज़ें हैं, कौन सी? द विंड और द सन. दिस आर द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. दिस आर द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर लाइफ नहीं है. वी आर सेइंग दैट इट इज़ ब्लोइंग, इट इज़ शाइनिंग. ये क्या है? दिस आर द ह्यूमन फीचर्स, दिस आर द ह्यूमन ट्रेड्स, दिस आर द व्हाट वी कैन से, दिस आर द traits that belongs to the living creatures. Okay, living creatures. So here we are giving the non-living objects these certain features like blowing and the shining. Okay, personification allows the writer to create life or motion within an inanimate object, animal, or even abstract ideas by assigning them recognizable human behavior and emotions. अभी एक चीज़ ध्यान में रखना है, whenever you are coming across the figure of speech personification, तो हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को हम ह्यूमन की तरह जो है फीचर्स बता रहे, उनको ह्यूमन्स की तरह या फिर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स रहे, एनिमल्स और इवन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को हम क्या दे रहे, ह्यूमन बिहेवियर और इमोशंस की तरह देख रहे. Okay, some of the examples I have mentioned here, I will not read all of them, you have to just go through the PDF. कुछ examples मैं यहाँ पे read करूँगी. The wind howled outside her bedroom window, the grease jumped out of the pan, the leaves let go of the tree and danced to the ground. अभी leaves dance करेंगे. This is the feature, dancing is a feature of the human, like a live object, but the tree or the leaves mentioned here are the non-living objects. Okay, next is the wind was angry that night. The wind was angry that night. Is the wind, can really the wind be angry? No, it can't be. But यहाँ पे हम पर्सोनिफिकेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो विंड है एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, उसको एक ह्यूमन ट्रेट दे रहे विच इज़ एंग्री, ह्यूमन फीचर. ओके, सो दिस आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. सो यू हैव टू गो थ्रू ऑल द एग्जाम्पल्स. मैं PDF भी प्रोवाइड करूँगी. सो रीड द PDF ट्वाइस. चीज़ें जो है अभी से आपको करनी है, एक्सरसाइज, ये चीज़ें अभी से करनी है, देन यू विल अंडरस्टैंड ऑल दी फिगर ऑफ स्पीचेस, एग्जाम्पल समझ आएंगे. 2-3 बारी PDF जो आपको रीड करना है. Next one is the apostrophe. Now look here, apostrophe is something that we have heard already. Apostrophe. Okay, apostrophe. But apostrophe is also a figure of speech. So it is a figure of speech that is used to address someone who is absent or already dead. अगर कोई person या चीज़ एब्सेंट है या फिर डेड है, उस चीज़ को मेंशन करना, एड्रेस करना, तब हम क्या यूज़ करेंगे, एपोस्ट्रॉफी. इट कैन बी ऑल्सो यूज टू address an abstract quality or an idea and even a non-living object. एक ध्यान में रखना है, non-living object को अगर हम features दे रहे, that is personification, human features, human traits. But अगर, a minute please, non-living object, a dead object, अगर उसको हमें एड्रेस करना है, मेंशन करना, दैट टाइम वी आर यूजिंग अपोस्ट्रॉफी. डिफरेंस समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. द वेरी फेमस पोएम दैट वी हैव हर्ड फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई. दिस इज अ नर्सरी राइम विच वॉज पेन्ड बाय जेन टेलर and needs no instruction to children. It is a clear reference to the star and the first introduction of a child. This rhyme proves the classic use of the apostrophe. ये जो example है of the poem which we have heard or the nursery rhyme which we have heard from our childhood is a best example or classic example of the apostrophe. Okay, यहाँ पे जो है twinkle twinkle little star. Okay, the star के साथ जो है बातें कर रहे हैं, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. ओके, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई. सो द
dead object twinkle star, okay, twinkling star is actually the, actually we can say this is the abstract quality or an idea of the non-living objects, okay, which is like a diamond in the sky. Okay, here clear reference to the star and the first introduction of the child has been carried out. This rhyme proves the classic use of the apostrophe. Some of the examples let us see now. Why do you bother me so much, you idiotic computer? Now this idiotic computer, computer is what? Computer is the non-living object, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, और इस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हम एड्रेस कर रहे हैं, यू इडियोटिक कंप्यूटर, ह्यूमन ट्रेड्स के अंदर उसको एड्रेस कर रहे हैं. ओ कैप्टन फाइनली यू ड्रेडफुल जर्नी इज ओवर, कांट टॉक टू यू नाउ डियर आइज कांट टॉक टू यू नाउ. दिस इज अगेन समथिंग we are addressing a non-living object. Okay, oh bed finally I am with you, so we are talking with the bed. It means that basically मुझे सोना है, राइट, यही चीज़ है. वो हम किस तरीके से यूज़ कर रहे, ओ बेड फाइनली आई एम विथ यू. इट मीन्स दैट काफ़ी ज़्यादा टाइम से आपको आराम करना था एंड फाइनली यू आर टॉकिंग लाइक दिस, दैट ओ बेड फाइनली आई एम विथ यू. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बेड हैज़ बिन एड्रेस्ड. सिमिलरली मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए, यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ द एग्जाम्पल्स. ओके, एंड दिस वॉज एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर. और आज के लेक्चर में हमने फिगर ऑफ स्पीच के कुछ जो है एग्जाम्पल्स देखे हैं. वी हैव डिस्कस सम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीचेस एंड विल डिस्कस मैनी मोर. हम और डिस्कस करेंगे इन द अपकमिंग नेक्स्ट लेक्चर्स. ओके, सो दिस वॉज एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग इट. अगर प्लीज़ वीडियो पसंद आ रही हो तो जो है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके ज़रूर बताना. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करना. ओके, एंड आफ्टर वॉचिंग द वीडियो ओनली I'll share you the PDF. Okay, thank you everyone.